I think Dr. Saab was saying, when you come on this stage and यार मैं स्टेज पे तो बोल नहीं पाए वैसे बहुत ही so I belong to that category. My name is Saurabh, and it was very emotional journey when Suresh was speaking about, because most of the things which he was talking about I did it at least 20 years ago. So it's like thank you for taking me to the memory lane. As of now, I run an artificial intelligence company based out of US. We have got an engineering office in Noida, and we recently started in London. And I was there in London when I actually got his message, and it was like, कि Noida में हो रहा है. It is like one of its kinds of platform for people who belong to Noida. Like it's very rare to see this quality of event here. So I really am very happy that you are bringing this to Noida. Great. Okay, great. So I've done a lot of things in my life, right? From starting, coming from a very small place, doing all those big things, whatever he has said. I'll tell you one thing which really helped me in doing this thing. Actually, two things. One thing is alpha. I'll tell you about what is alpha. And the second thing is the art of storytelling. So most of the speakers which you see and we really get impressed with, there is a way they speak. Believe me, it's something which majority of us have learned because of the opportunities we got in our career to travel across, to meet different people, learn how they speak, absorb their nuances, right? And how we are able to adopt all those things in our day-to-day speaking culture. So this piece of storytelling will help you. So if there are, how many of you are professionals who work somewhere? Okay, great. And how many of you are having their independent business? Excellent. So I'm very sure from the first category, they are here because they want to move to the second category, correct? So this art of storytelling will help you create and sell, not to only your friends, family, immediate customers, prospect, or whoever you meet. This is just the way you speak over there. But before that, I'll tell you about alpha. All my things in my life which I achieved is because I understood what is my alpha. So an example of alpha is, how many of you heard about Apple? Everyone, right? So alpha for Apple is the iOS, the operating system in the phone which they make, right? It's just a piece of software actually you see. And then there is a beta. Beta means they can build more softwares, but they created an app store where a lot of people can come and build more softwares for them. So they are not working in that app store, but there are around the clock, there are people around the world, like more than 1 billion people who are actually writing softwares for them, for free. They are not paying them anything actually. They make money out of it. And the third thing is gamma. Gamma is, Apple has got a lot of money, and then they can go ahead and manufacture the phone themselves, but they decided, right, to give it to a company known as Foxconn, which manufactures phones for Apple. So why my example is a very technical, because I am 40 years today, and I've spent more than 25 years just in doing technology, so I don't know anything else. Okay, so just bear with the example. So alpha means understanding what you are really good at. And you can beat everyone in the game with that one single thing. So Apple is good at designing the whole system, the iOS piece. Okay. What is beta for you? Beta means you have got the competencies to do that thing. Okay, but you're not the best in it. So maybe you are a guy who sells real estate. Okay, so real estate is a very wide field. But you are a guy who, your alpha might be selling the villa. An independent villa, not even a flat, but just a villa. And in that villa also you can say a villa within a crore. That is one thing. So now in a crore of villa, normally the families which you target would be someone like me who just got some money or just got some successful in his business or attained a level in his corporate professionals. So in that piece, he says,
My alpha is selling this 1 crore villa to people with the age of 30 to 35, are married and might have a kid or might not have a kid, and are looking out for as a piece of investment in and around Delhi, not in Delhi, around Delhi, because it is just 1 crore villa. So maybe they are happy to stay put again. So if you can clearly define your expertise the way I define to you, and you think that is your alpha, just focus on it. Beta is, you can send, like, let me just expand a bit and you can feel the difference. If you expand your horizon of saying, oh, 1 crore ka villa, everybody who has got a crore is my customer in the world. पूरे साल भर में मतलब 10 तो ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, राइट? या 10 लोग कैसे मिलेंगे? रोज 1 लाख लोगों को मैसेज भेजेंगे. Everybody might have received real estate messages, right? Okay, लोग भेजेंगे और 10 तो हो जाएंगे. So what you're trying to do right now is, when you have such kind of wide range to focus, and specifically this is very important point for you when you're starting out. When you start, what you don't have is the resources. Resources is not only, what is resources as per you? Money is a resource? Time is a resource? Okay, energy is a resource? I think so. So she hit on a very important thing. Your mental bandwidth to focus on something is the biggest resource which you have. If you can take that mental bandwidth and define your alpha in the way you think, and go as close as possible to it, and give your full energy, 100% to it, the chances are that you will be very, 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 very successful. Okay? Falling into the beta phase is super easy, because you think ज़्यादा ट्राई करेंगे तो चांसेस है सक्सेसफुल होने के. Am I right? अगर यहाँ पर मैं जैसे networking also I have learned from by attending couple of Suresh sir sessions only, that you go into an event like this, right? There are so many people. कितना अच्छा है, सबका कार्ड मिलेगा. कितने सारे लोगों से, पानी वाले से भी मिल रहे हैं, आयुर्वेदिक से भी मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, करियर काउंसलर, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, सबसे कार्ड ले सकता हूँ. बट दिस इज वेयर योर अल्फा नीड्स टू किक इन. यू नीड टू सी, एंड दिस इज अ वेरी फनी स्टोरी, यू नो. सो वी वर स्टार्टिंग RealBox US, and one of my friends came down to India, and people use this analogy every time when they are trying to link themselves to you. So he comes to me, he said like, तू ना US में शुरू कर. मैंने कहा अच्छा ठीक है, तू शुरू कर. I know lot of people in US, lot of people. बहुत आराम से हो जाएगा, and I'll set up the meetings and all, and बस तू आ जा वहाँ पे, करके करवा देंगे, बन जाएगा तेरा. And I'm very sure you might have heard this thing from your friends so many times. बहुत easy है सुरेश जी, शुरू करो आप तजुर्बा. I'll give you 50 तो मेरे ही दोस्त हैं. This is how people talk. You know what I tell to them? तुझे पता है ना, मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ. And so you can understand how many people I know. And I tell him very one simple thing. He's my friend for last 12-13 years. He used to be my project manager. मैंने कहा देखो आप इतने लोगों को जानते हो, मैं सिर्फ वहां पर पहुंचने के लिए जहां पे मैं हूं, वहां पे लेस देन 3 लोगों को जानना पड़ता है. अगर आप सिर्फ 3 थंग के लोगों को जानोगे तो आप यहाँ होंगे. एंड यू नो, एंड कंपेयर टू यू, आई न्यू ओनली one guy in the company at that point in time, and from that one guy I made this $5 million company straight out of the box. And you knowing everybody in the company didn't work. So this is also a very good example when you're making connections, right? Beta is so lucrative. Like a software developer, कोई बंदा है, वो सोचता है मैं कुछ भी सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ पूरी दुनिया में. It's so easy, right? कोई फर्क नहीं पड़ता था. It's very easy. The biggest problem with the beta is very lucrative.
वेरी वेरी लुक्रेटिव। मेरे पास 20 लाख रुपए ऐसे तो कुछ भी करा जा सकता है। मोमो की दुकान पे देखा तो दोस्त से बात करिए कैफे खोल लेते हैं, क्योंकि रोज रोज वहाँ कॉफी पीने जाते थे। अगर सीपी चले गए तो लोग बोलते हैं थोड़ा बार खोल देते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। एक बार इवेंट में आए कहेंगे तो बड़ा अच्छा है, सुरेश जी तो बहुत पैसा कमाते हैं, इवेंट ही खोल देते हैं। So it is very easy, you know, when you are at an age of 30 to 50, it's very easy to get swayed by beta. My just one learning from all my life is understand your alpha once. मैं 7th क्लास में था, फेल हो गया। I go to my dad and I ask him, पिटाई तो हुई थी, मैंने ये पढ़ते पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, पढ़ लेगा कुछ नौकरी वोकरी लग जाएगी, पैसा वैसा मिलेगा। मैंने कहा कितना पैसा कमाना चाहिए। सो आई lost him 5 years ago. He told me 10,000 rupees. And then I have to decide, you know, कि यार ये पैसा कमाने वाला चक्कर क्या है, कैसा है। And I looked outside, and since I was a kid, I was hardly 12-13 years at that point in age. I thought like I can to do anything. But then I realized कि ये कुछ भी करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है. And the only thing which I didn't have as a kid was money. I said तो क्या कर सकते हैं? And that is where I started searching कि यार जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो काम करता है वो ही काम करना है और कुछ नहीं करना है. So at that point in time I got to hear about Bill Gates. And I realized what he does is very cool. He takes a 50 rupee floppy, copy pastes the software and sells it for 5,000 rupees. मैंने कहा ये बहुत amazing है. उस दिन से लेकर आज तक this is the only thing I have done. मतलब मेरी उंगलियां भी सीधी नहीं है actually, तिरछी हो गई है इतना. So if you can identify your alpha, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक चीज बताई कि जो मेरा अल्फा है आज वो मेरा अल्फा था नहीं. तो इस अल्फा बताने के लिए ये कोई लिमिटेड मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आपका वो अल्फा आज हो ही आपके पास. आप किसी भी चीज को अपना अल्फा बना सकते हैं. लेकिन अल्फा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज देयर कि लॉट ऑफ पीपल टेल यू नो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, फोकस ऑन. बेटा पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा. मेरी बेटी है, मैं भी उसको बोलता रहता हूँ इतना वैसे बेटा पढ़ लिया करो, फोकस. लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू विल टीच बट नोबडी एवर टॉट यू व्हाई टू फोकस एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फोकस. फोकस का बेनिफिट बहुत ही सिंपल होता है. फोकस का बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि मुझे फालतू चीजें सोचनी नहीं पड़ती, 4 और वेरिएशंस नहीं समझनी पड़ती. मुझे पता है मैं पेंट करता हूँ सिर्फ ब्लैक कलर से और सिर्फ आउटलाइन आर्ट बनाऊंगा और सिर्फ मैं सीपी में ही भेजूंगा. तो मेरे को टेंशन नहीं है सुबह उठ करके कि करना क्या. मैं ब्लैक पेंट उठाऊंगा, पेपर उठाऊंगा और सीपी चला जाऊंगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और फिर मैं रोज सोच रहा हूँ कि यार आज कहाँ जाएंगे, सो ये सारी चीजें अल्फा सॉल्व कर देता है. So now you understand the value of alpha. Beta is lucrative. Gamma क्या होता है? Gamma actually में ना बहुत ही rich लोगों के लिए होता है. Gamma is not for everybody. Gamma लोग की बहुत ही rich है, उसको वो कुछ भी कर सकते हैं. तो आप मतलब हमारे देश में गामा कौन है? Exactly. So वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको अल्फा बीटा गामा के चक्कर में नहीं पड़ने का. तो जिसका भी अल्फा बीटा गामा होता है, फिर रियलाइज उनका अल्फा क्या है. Interesting, right? Okay, so the idea is never settle for the things which you can do. Always settle for things which you are the best at. Identify it once. Believe me, if any of you who has a business here, if today you go back or you can talk to me, I'll be available for some more time here. I can help you specify your alpha once. Just follow that alpha for गिन करके सिर्फ 3 हफ्ते. If you don't get results, you can actually call me. कि यार कितना झूठ बोलते हो. 3 हफ्ते. That's it. That is what is required. Okay? Good. So I'll just quickly tell you the second piece, which is the art of storytelling. Okay? एक बार क्या हुआ था कि एक कपल था.
right? And the couple was trying to buy a painting for their son कि रूम में उसके लगा देंगे अच्छे से. So they go in a place जहाँ पे बहुत सारे लोग पेंटिंग्स बेच रहे थे. देखना देखते 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 तो हस्बैंड जो था वो थोड़ा मेरी तरह था, वो सोच ही रहा था कुछ ना कुछ, पेंटिंग में उसका ध्यान ही नहीं था बिल्कुल. वाइफ वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट ये पेंटिंग ये पेंटिंग. तो हस्बैंड वाइफ ही वॉज ऑन फोन, जैसे मैं रहता हूँ हमेशा फोन पे ही ऑल द टाइम. सो वहाँ पर जो मुझे मेरे जैसे आदमी को एक पेंटिंग दिखी, उसमें क्या था ना, पिगलेट होता है ना, पिगलेट पिग नहीं होता, पिगलेट पिग का बेटा होता है, एकदम पिंक कलर का होता है वो. तो वो एक ओशियन के अंदर, ब्लू वाटर के अंदर वो ऐसे ऊपर नीचे करता हुआ, तो आधा पिगलेट पानी के अंदर आधा पिगलेट पानी के बाहर, और वो छोटी सी पेंटिंग रखी हुई है वहाँ पे, छोटी सी थी, मतलब एग्जैक्टली इतनी बड़ी. एंड उसको ऐसा है कि अरे एक मिनट रुक, मैं फोन कि अरे सुनो वो पेंटिंग सही लग रही है. तो देखिए ये क्या पेंटिंग है, पिगलेट, ये कोई रूम में लगाने वाली चीज़ है. तो अच्छा रुको, तो हमने उससे पूछा कि ये व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये क्या है. सो ही सेज कि देयर इज एन आइलैंड लाइक विच इज लाइक सीसी आइलैंड इन यूएस. वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जंगल में पिग्स रहते थे. तो धीरे धीरे आइलैंड पे खाना खत्म हो गया. एंड ऑल दिस piglets actually in order to search for food they started going to the ocean. तो वहाँ पे वो मरने लगे, क्योंकि वो मतलब everybody will agree कि piglets cannot swim, so they will die eventually. So इसलिए ना वो वहाँ पे मरने लगे. तो उस तरह से जब ये कहानी थोड़ा वहाँ पे बगल के रेस्टोरेंट को पता लगी जो और नियर बाई टाउन में था, so he started bringing leftover food to the island so that he can feed the pigs. So ये सारे पिगलेट सब वहाँ से खा करके तब ये पेंटिंग उसी के डिपिक्ट करने के लिए बनी. तो बहुत ये $250 उसने दिया, पेंटिंग ले आया. So what I told you was just a story, okay, so that you can understand few things. Before me also, Dr. Saab also told you a story, okay, कुत्ते वाली story याद है. So I'll decipher that story for you, so that you can create अपना मनपसंद कुत्ता, अपनी मनपसंद बहन और अपना मनपसंद को. हर एक स्टोरी में जो सच्ची स्टोरी टेलिंग होती है उसके अंदर एक हीरो होता है, लेकिन वो हीरो बनता नहीं है, वो सिर्फ हीरो होता है. जैसे कि मैं अपनी स्टोरी में मैं हीरो हूँ नहीं, लेकिन मैं अभी हूँ एक्टर. फिर एक चैलेंज होता है उसके सामने. सो जब तक स्टोरी के अंदर चैलेंज नहीं आता एक्टर के सामने, तब तक वो स्टोरी नहीं होती. तो आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं अपनी स्टोरी में, तो आपको वो चैलेंज रखना होता है हमेशा सामने. तो आपकी स्टोरी में अगर एक्टर क्लियर कि मैं और मेरी बहन जा रहे थे, ओके, ऐसे ऐसे, और फिर कुत्ता आया, चैलेंज इन द स्टोरी, राइट. अब एक कदम मैं बढ़ा, एक कदम कुत्ता बढ़ा. तो ये जो चीज है, द फाइट, एक एक कदम की, तो उस चैलेंज के लिए कैसे फाइट हो रही है, अगर आप वो अपनी स्टोरी वो अपने 5 मिनट 2 मिनट के इंटरेक्शन में बता सके. एंड देन मीतू आगे गई, मीतू ने कुत्ते को ऐसे रखा और कुत्ता उसे चाटने लगा. वाह, मजा आ गया. और उसमें हीरो जीत गया, और हीरो ने अपनी एक पॉजिटिव थिंकिंग को यूज करके उसको वो चीज कर ली. तो हर एक अच्छी स्टोरी की यही 3 चीजें होती हैं: हीरो, चैलेंज एंड द हीरो विनिंग द चैलेंज. अच्छी अच्छी मूवीज आई आजकल. सो इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दीज 3 बेसिक थिंग, सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट आई कैन टेल यू देयर इज अ big difference between people who understand alpha and people who can tell a good story. And if actually you can do this thing, मतलब मैं बता ही नहीं सकता. Few examples are already there. Rest I am very positive that in coming more weeks, सर और लोगों को यहाँ लाएंगे, and I am very sure कि few of you are destined to come to this place. You know why? Because जो अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है ना, उसकी खासियत होती है, उसकी खासियत क्या होती है, वो बहुत इन्फेक्शियस होती है.
बचपन में हो ना ब्रूसली की मूवी देख के निकलता है बंदा, थोड़ी देर ब्रूसली रहता है, जब तक कि एक लोहे के पिलर पे उसका पैर लग नहीं जाता। लेकिन जब तक वो नहीं लग रहा है तब तक वो ब्रूसली है। सो एवरीवन हियर इज अ ब्रूसली टिल द टाइम वी डोंट हिट अ वॉल। बट अब तो आपके पास पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है ही, तो आपको पता है क्या करना है। एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।